So after India lost that WTC final, there has been a lot of blame game going on and a lot of blame was put on IPL. But is IPL really that bad for Indian cricket? 1, 2, 3, 4. Welcome to yet another exciting episode of Behind the Wickets. I'm Bhumit Mathmudar and with me I have Bhavik and Sanket. Welcome guys. India once again lost another knockout final, a knockout match of an ICC tournament, and a lot of backlash was on the head of IPL. A lot of eyebrows raised thanks to the scheduling of the IPL and the WTC that went so close to each other. What are your take on this? Is IPL really getting an upper hand on the national duties of the players now? Yes, Bhavik. I'll allow you to take this first. Well, no, I mean it's मतलब मैं अगर इसको बहुत बेसिक लेवल पे बोलूँ ना तो प्रॉब्लम ये है साइकोलॉजी के हिसाब से कि अगर कोई मेरे से कम मतलब किसी की आमदनी मेरे समझ के हिसाब से जो होनी चाहिए उससे कम है तो मेरे को उसके लिए सिंपैथी है, बट द मोमेंट मेरे परसेप्शन से ज्यादा किसी को पैसे मिलने लगे तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. That is what is happening with Indian cricketers. इसमें किसी कौन है और मुझे कौन है ये भी बता दो. Majority of the people who are blaming IPL, they have a problem with people with cricketers earning so much of money. जब सलीम दुरानी और सीके नायडू के टाइम पे उनको खाने पीने के तक के पैसे नहीं बचते थे लास्ट में, तब उनके लिए सिंपैथी होती थी कि यार इतना इंडिया के लिए खेले हैं पर इतना भी और आज काफी दूसरे स्पोर्ट्स में अभी भी थोड़ा बहुत वो हालत है. They are not able to meet ends at the end of the day after retiring. Whereas, thanks to IPL, every player who has represented India is getting pension today. That wouldn't have been possible without IPL. ये मैं अगर एक broad scale पे बात करूँ. But that's a very good point that you brought. And ये actually ये बहुत बड़ा topic भी रहा है discussion का across all media formats that we have seen is कि क्या अब प्लेयर सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं and do they rate this over their national duties? संकेत भाई, what's your take on that? भाविक ने जो कहा वो बात सही है. That initially the cricketers who used to play before 1996 specifically, I would say, were not paid that high. और ये I would जगमोहन दालमिया जब से BCCI के प्रेसिडेंट बने एंड 1996 जब से वर्ल्ड कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, इवन दैट टाइम स्पॉन्सर्स इतने नहीं मिल रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1996. तो 1996 आई वुड से कि BCCI इंडियन क्रिकेट का थोड़ा बहुत आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप इन इंडिया एक थोड़ा फाइनेंशियल चेंज आया था. बट post that, yes, IPL came at least 10 years, a decade after that, and since that time, Indian cricket financially काफी आगे बढ़ा. But IPL actually changed the face of Indian cricket for sure, and all the cricketers, as mentioned by Bhavik, जिनको पैसे नहीं मिलते थे, who did not have second income, I would say, after their cricketing career, they were struggling. And thanks to IPL, this all was a good thing for all the cricketers who have played, the legends who have played, who have given their heart and soul to Indian cricket. अब उनको कुछ ना कुछ in terms of pension, in terms of अब जो खेल रहे हैं उनको तो खैर चांदी ही चांदी है ऐसा बोल सकते हैं. And not only Indian cricketers, it's a चांदी चांदी सिनारियो बाकी के सब क्रिकेटर्स के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी हो गया है. There are more leagues coming up other than IPL उनके competition में, but there is no one as prominent as IPL has been for over a decade now.
तो बात सही है, बट उसके साथ जो ये सब प्रोज है, द कॉन्स आर, वी हैव सीन जब पैसे ज्यादा आते हैं तो पॉलिटिक्स, माल प्रैक्टिसेस, मैच फिक्सिंग और ये सब भी वो साथ में लेके आता है. And we have seen this in year 2016-17. Two teams, the topmost two teams, CSK and Rajasthan Royals, were banned. They were found guilty of match fixing. Rather, the franchisee owners were involved in this. और उन दोनों franchisees को 2 साल के लिए इन्होंने बैन कर दिया था. So I feel with money, no doubt, infrastructure और ये सब चेंज हुआ है, सबकी मैच फीस बढ़ी है, but at the same time, it comes with its dark side as well, and we are all we have all seen it, we have all gone through it. और audience, from an audience point of view, I would say कि उनका उस टाइम पे मैच फिक्सिंग 92 के टाइम पे काफी हाई रहा था. 92 से लेके से समवेयर अराउंड 1999 फिर there were no match practice, this thing news coming up, और फिर again with IPL ये सब शुरू हुआ था. तो with pros comes its cons, and IPL इसके वजह से I feel थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहा ही है. बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. ये जो मनी की बात है ना, नाउ even the players, the domestic players who at some level we know कि कौन domestic level में कौन ऐसा player है who will make it big in the Indian team. ये पहले भी पता चलता था, अभी भी पता चलता है. And then there are other players whom we know कि चाहे कितना भी मेहनत कर ले domestic में, they won't be getting a realistic chance at the Indian jersey, right? अभी ऐसे players के लिए भी IPL is a very good base of income, जहाँ से even if they don't make it big, they can at least play for 1 or 2 franchises for a few years and they'll earn enough money to withstand a lifetime. और then they can of course go into, अब IPL की वजह से actually देखे job opportunities भी काफी open हो रही है. We are only talking from the point of view of cricket and cricketers, but if you look at one team in the IPL, for example CSK ले ले, so CSK will not only have 20-24 cricketers, they'll have 10-11 coaching staff, they'll have physios, they'll have that many analysts, cricket analysts उतने होते हैं. उसमें भी cricket analysts भी अलग अलग टाइप के होते हैं. They carry their own a lot of support staff along with them. तो अगर देखें तो plus with that continuous cricket that also earns that much money to that stadium. जो हमारे stadiums अभी पहले बहुत गिने चुने stadiums थे इंडिया में जो बहुत कहते थे हम international level का stadium है. But I think a lot of credit goes to IPL कि अब हमारे पास इंडिया में within India there are so many good stadiums which are all international level, and a lot of money for that infrastructure setup has come from IPL. But that topic separate. National duty एक बहुत ही बड़ा point रहा है, and it was extremely evident and extremely talked about in this WTC final also. IPL खत्म हुआ, within a few days we had WTC final. Our top order batsmen, our bowlers, everyone after playing 2 months of IPL completely tired, not having enough rest, and had only played and practiced white ball cricket and T20 shots. Coming to play the test matches looked absolutely out of sorts. Now एक पॉइंट पे मैं आईपीएल को भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से बिना आईपीएल खेले भी हम जब बैटिंग करते तो ऐसी बैटिंग करते थे टेस्ट में. तो so I don't know if we can really blame IPL for that, but there's been a lot of hue and cry about, mainly for this point, there's been a lot of backlash against IPL. I think ये आप मतलब अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर एनालाइज करो, राइट, जो ड्रॉट है वो आईसीसी ट्रॉफीज का है फ्रॉम 2013 टू टिल डेट. मतलब 10 साल में हमने ट्रॉफीज नहीं जीते. बट क्या ट्रॉफी, मतलब आई एम नो वे डिफेंडिंग के ट्रॉफी नहीं जीतो चलेगा. बिल्कुल मेरे आई एम एज बिग अ क्रिकेट फैन ऑफ इंडियन, आई एम एज patriotic Indian cricket fan as anybody else can be. मुझे उतना ही दुख है उस चीज का कि हम ट्रॉफीज नहीं जीते हैं. बट
अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो तकरीबन 6 साल कंसिस्टेंटली इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे रही है, राइट राइट? कंसिस्टेंटली हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशंस पे रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। कंसिस्टेंटली हम एक ही टीम है जो हर बार और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू मेड इट टू द फाइनल्स। एटलीस्ट सेमीज नहीं, इनफैक्ट 4 फाइनल्स खेले हमने, दोनों WTC फाइनल खेले हैं। वी हैव प्लेड द फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, वी हैव प्लेड फाइनल ऑफ द वी हैव प्लेड, सो आई मीन दैट इज सम कंसिस्टेंसी, राइट? हर एक टीम नहीं पहुंचती है हर बार। न्यूजीलैंड देखो आप, they were the finalists, इस बार they were bottom of the table in the this WTC cycle. Yeah, and they can't even blame IPL for it. तो वो भी वो भी IPL के रहते ही हुआ है ना। और ऐसा थोड़ी है कि 2008 से पहले हमने 83 में वर्ल्ड कप, 2007 से पहले अगर देखो तो हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता था, वहां तो नहीं था IPL। तो वहां कौन सा हर बार आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते थे? agreed Bhavik. To all the arguments that you are giving, I completely support that. But let's not forget कि जैसा भूमित ने कहा कि जस्ट आफ्टर दी IPL हमारी मेजर टूर्नामेंट्स होती है। इफ एट ऑल वी से WTC तो ये 2 साल से ये हो रहा है। बट देन अदर देन दैट WTC अगर नहीं होता था तो व्हाट हैपन कि या तो हम जिम्बाब्वे की टूर करते थे या तो हम आयरलैंड या समवेयर आई मीन अमीनो कंट्री का टूर करते थे वेयर आवर सीनियर प्लेयर्स वुड टेक रेस्ट। राइट, सी we have not seen this happening prior to IPL के players rest मांगे, बराबर है। तो what is baffling is you would do anything to play for your country, but players are giving a miss to the international commitments as compared to the IPL cricket. मैं समझ सकता हूँ कि भाई they have to earn a good living as well, and there are no options for a cricketer. They do not have a long career, at least a sports career, I would say. So they have to make enough money to survive for the rest of their life. But at the end of the day, when ये जो ऑडियंस है जो देखती है वो यही देखती है कि भाई दे आर मिसिंग आउट ऑन द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड वी हैव सीन नॉट ओनली मिसिंग आउट ड्यू टू रेस्ट, इंजरीज आर coming more on surface just because of over play in IPL. वैसे देखने जाए तो 14-15 मैच खेलते हैं, ज्यादा नहीं खेलते। But then it's not only the 14-15 matches that you are on the ground, the traveling that takes a toll on your body, the net practices every day. And see, it's not that easy because you finish your match late in the night around 11 to 12, then you take a flight on the same day. You do not sleep well, your body does not get acclimatized to this, and ultimately you face injuries and you are out for a long time. And a very good example is Jasprit Bumrah, who has been a national I would say a diamond of India, but हम उसे पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट्स ऑल, अभी यहाँ थैंक्स नहीं बोलूंगा, बट इट्स ऑल ड्यू टू IPL। मैं समझ सकता हूँ इसमें NCA का भी बहुत बड़ा पार्ट है कि players who are injured are rushed into international duties or IPL just to ensure कि भाई वो पीछे ना रह जाए, कि वो भी खेले। But we are facing this and lack of this good players availability. India जो भी इतने सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक पहुंची है, अगर ये प्लेयर्स होते तो दे वुड हैव गॉन पास दिस फाइनल हर्डल और उन्होंने ये ICC ट्रॉफी जीती होती। याद है कि IPL में there used to be a culture of late night parties also. Yes. Back then. Now I don't know what's it right now. But this
too much money, too much partying, seeing too much of fame at such an early age, for at least for players who are just making it to the big stage. Is that a huge intoxication that actually takes them away from their original goals and original path of getting that fame for the Indian jersey? Before answering that, I'll just cover some of the points that I want to address. So before answering that, let's when we talk about players preferring national IPL over national duties, we've written a blog on our Facebook page on this also. Is it really players' call? Is it Virat Kohli or is it for Virat Kohli's or the Bumrahs or the Rohit Sharmas to decide for themselves whether they can play IPL or not? When the broadcasting rights and all of that is involved, I don't really think it is their own individual call anymore. And when it comes to not playing against countries like Zimbabwe and Ireland, I think it is in fact better that they take rest in such series, because then only the youngsters can get an opportunity at international level against us, against rather less stronger teams, and they can start getting their footings inside. So there is nothing wrong with that. If at all, my question would be, if as a fan I have to ask, I would rather ask BCCI, supposedly the most powerful board in the world, supposedly the most richest board in the world, why are you not able to dictate terms to ICC that the scheduling of the major tournaments will not collide with IPL schedule? Because IPL is a reality, nobody is going to change it. Why is BCCI not able to, or should BCCI now go first step forward? And like there is already almost a window of no international cricket is happening while IPL is happening, right? So during IPL कोई और international tournament कहीं नहीं हो रहा है अभी, ये तो शुरुआत हो चुकी है. तो शायद अगला स्टेप बीसीसीआई के लिए ये होगा कि अगर WTC की फाइनल होनी है तो IPL के पहले हो जाए, क्योंकि वो वैसे भी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया है कि वो बेटर रहेगा. You know, तो when you do that, and now just to answer the question what Bhumit was asking about too much money at too early age and intoxicating, definitely true, but मेरे ख्याल से वो बहुत short lived होता है. आप उन्मुख चंद का केस देखो और ऐसे जितने भी एग्जांपल्स आप लोगे, if you get deviated, that success will be very short lived. exactly, that's the point. Is this too much of fame actually killing their careers early? हाँ, But वो हो ही रहा है, क्योंकि देखिए नॉट ओनली द शेल्फ लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर इज शॉर्टन, क्योंकि पहले क्या होता था कि टेक फॉर एग्जांपल कपिल देव, उन्होंने जितने भी मैचेस खेले, व्हाट आई हियर इज एंड व्हाट वी ऑल नो इज, उनको इंजरी के वजह से एक भी मैच बाहर बैठना पड़ा ऐसा नहीं हुआ था, राइट? Whereas what we see with this cricketers of this day and age is they are playing round the clock, round the year, and due to which certainly your body will require some rest. There is going to be wear and tear, and see it is but obvious कि injuries होंगी, पर ये injuries इसीलिए हो रही हैं क्योंकि क्रिकेट इतना बढ़ गया है, और हमारी एक्चुअली ये ऑफ सीजन हुआ करती थी. March, April, or say April, May would have been the off season of Indian cricket, is now getting into too much of cricket. वो 2 महीनों में उन्होंने पूरा IPL इस तरह से स्टैक इन कर दिया है कि not only are you traveling around the clock, you are also playing around the clock for say 2 long months and without getting any breather. And it's quite obvious कि ये खेलने के बाद mentally तो आप थक ही जाते हो with all the traveling and everything, but physically also there are all the chances that you might pick up a niggle, you might pick up an injury, or we have seen so many players who have gone down after completing their IPL stint. So this is happening, and I guess ये रहने वाला है. We'll have to accept this fact and move ahead कि भाई
अभी जो क्रिकेटर्स आएंगे उनकी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं रहेगी. Probably they won't be playing more than 7-8 years, and that would be it. नहीं बट वो ठीक है. मैं एक और पॉइंट एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या आईपीएल से बेनिफिट ज्यादा हुए या प्रॉब्लम्स ज्यादा हुए हैं. तो आईपीएल अगर आप देखो तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बिकॉज ऑफ आईपीएल कितने यंग प्लेयर्स आपको मिले ओवर द लास्ट डेकेड. इफ यू सी the number of players you fetched because of IPL and its scouting team respectively, वो मेरे ख्याल से they will easily outnumber in totality आपके पिछले 5 डेकेड के प्लेयर्स. And that is what the domestic circuit cricket of any nature should do. It should give the opportunity to the young players. आज सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो भूमित ने भी बताया कि एक ऑल्टरनेट करियर के मतलब इफ आज से 20 साल पहले की बात करें कि जब एक बच्चा क्रिकेट एस्पिरेशन है तो सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट्स के दिमाग में होता था कि यार अगर इंडिया नहीं खेला तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या. राइट. जो आज अगर एक बच्चा क्रिकेट में करियर बनाना चाहता है तो वो सवाल नहीं आएगा शायद पेरेंट्स के दिमाग में, या परसेंटेज ऑफ वो सवाल का कंसर्न कम हो जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर आईपीएल. क्योंकि अगर डोमेस्टिक में प्लेयर्स आएंगे नहीं तो इंटरनेशनल में कहां से आएंगे. राइट. बट पहले until IPL the aspiration was to play for India. Post IPL the aspiration is to play for MI, is to play for CSK, play an IPL, get a contract. That is the only aspiration the new generation is coming up with. There might be exceptions for sure. Everybody wants to play for India. बट अभी शॉर्ट टर्म गोल जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, लोग अभी ये टारगेट कर रहे हैं. एंड आई हैव सीन दिस, आई हैव बीन हियरिंग दिस, एंड nothing new and which is quite obvious. ये होने ही वाला है क्योंकि उनको भी पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल गया तो उनका पूरा डेकेड अच्छा रहेगा. राइट. दे वोंट हैव टू worry about their life after cricket. So that is quite obvious. Yeah. And I agree. I IPL has given big players. ठीक है, अगर हम नाम गिनाए अभी जो करंट इंडियन टीम है उसमें नाम गिनाए, अश्विन, जडेजा, द टू पंड्या ब्रदर्स, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सब आईपीएल की देन है. ऑल दीज प्लेयर्स हैव कम फ्रॉम दिस आईपीएल, जो अभी बड़े बड़े मैच विनर्स बने इंडिया के लिए. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इनफैक्ट सिर्फ इंडियन टीम के लिए नहीं, इफ यू लुक एट द अदर नेशनल टीम्स, Shane Watson, his career was going in dumps, absolute dumps when he was playing for Australia. He came to IPL, he had a fantastic season for Rajasthan Royals, और वहां से उनका ऑस्ट्रेलिया कैरियर भी रीस्टार्ट हो गया था. The same thing happened for KP, Kyron Pollard, the same thing happened for Sean Marsh. In fact, Sean Marsh ने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू भी नहीं किया था. He first came and played the IPL where he did exceptionally well, जहां से उनको ऑस्ट्रेलिया का कैप मिल गया था. All right, one last final point, a quick take on this. Pehle, before IPL came into existence, we used to hear anecdotes from people like Kevin Peterson कि मैंने राहुल द्रविड़ से पूछा how to play spin bowling better, और राहुल द्रविड़ ने मुझे लेटर लिख के बताया कि आप ऐसे ऐसे करो. With the formation of IPL, what has happened is ये केविन पीटरसन और राहुल द्रविड़ जैसे लोग एक टीम में बाजू बाजू में बैठते, they can quickly exchange their knowledge. इससे यंगस्टर्स को काफी हेल्प हो रही है, we can see that. But एक बहुत ही बड़ा सवाल मेरा यहाँ पे ये रहता है, द फॉरेन प्लेयर्स व्हेन दे कम हियर, कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा होता है यहाँ के प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स में. तो डू दे रियली हेल्प विद द माइंडसेट ऑफ आवर यंगस्टर्स, और आर दे, और आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट वेल, बट आर दे एक्चुअली स्क्रूइंग अप विद द माइंडसेट because only because of that cultural difference? Bhumit, I have a different take here. मैं अभी तक तो against में था, but then with this IPL, ये जो youngsters को ये जो एक chance मिला है to share the dressing room with all the international players, and you have been seeing the camaraderie between the domestic players, Indian domestic players, as well as the international players. जो पहले इंटरनेशनल दो कंट्रीज के प्लेयर्स के बीच में भी इतनी नहीं थी, वो अभी अनकैप्ड प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में भी बढ़ गई है. राइट. सो आई मीन
क्या होता है कि now what we get, the players that we get, the confidence that we get from this domestic players, जो पहले नहीं होता था, तो उनको भी अगर बाहर ले जाते थे कहीं पे इंटरनेशनल पे, तो we used to see कि भाई they used to struggle, whereas अभी स्ट्रगल नहीं करते ऐसा नहीं है, but then the confidence level is totally different, and अभी when you play कॉन्फिडेंटली with स्ट्रगल करते हैं वो लोग. be confidently struggle. Exactly. Or, I mean, they don't have fear of losing. That is what I've seen. Or they're learning a lot of it from the international experience that they have in the dressing room. And I'm sure Indian cricket is gaining a lot out of it, without a doubt. Well, myself, on this note, I would just like to take two examples. I think Indian cricket should have already or may have in future think about giving a very big thank you note to Lasith Malinga for Jasprit Bumrah. And similar thank you note to somebody like Karen Pollard for the Hardik Pandya and the Kunal. There would be many such examples, See, Bhavik. Lasith- One starts at the top of the list. Absolutely. Correct. There are too many good players. Jadeja, I would thank Shane Warne for his Jadeja and Yusuf Pathan to a great extent. Exactly. Yes. So बट लसित मलिंगा वाला तो हमने उधार चुका दिया ना ये आईपीएल में, पथिरा न देख. Yes, that is true. Anyways, all right. I believe that's a wrap from our side today. We are running out of time now. And our conclusion is anything in excess is not good. Same goes for IPL. जब तक वो एक लिमिट में रहता है, as long as IPL does not become bigger than the game, we are very happy with the IPL. It should not preside over the national duties. That's our final say. And I hope we see many more exciting IPLs in future and many more ICC trophies also in the future. With that, we'd like to wrap this episode. And before we do that, a huge shout out to Abhishek Gupta, who has actually helped us research a lot of things about today's topic. And he has also provided some interesting insights on this. And he read some amazing blogs. We'll drop a link in our description. So do check that out. And you know the drill by now. Don't forget to share, like, and subscribe. That's what keeps our videos and our channel going. Till we meet again, it's goodbye from us. Take care and keep enjoying cricket. 1, 2,